interface. This is a file. In file, you can have a new file. Then you can run the application. You can open previous file. You can save as, okay. Whatever history is there, what is about the server COMSOL multiphysics. Okay. Then you have a definition. Definition I already told you the parameters which we define. Then we have a geometry. Okay. After geometry, we have a material. Okay. Then physics, mesh, study, and finally the result. Okay. तो प्री प्रोसेसिंग में क्या आएगा? डेफिनेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा, मटेरियल आएगा, फिजिक्स आएगा, मेशिंग आएगा. सॉल्वर में क्या आएगा? स्टडी आएगा. और पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा. डेवलपर, yes, if you are very good in writing a code, you can develop your own program also. Okay. So now what you are supposed to do is you are supposed to define the component. Okay. So component, when you will go, okay, here you are supposed to add a component. Which component we are doing? 3-dimension. Okay. So here 3D is there, 2D is there, 2D axis symmetry, 2D non-axis symmetry, 1D axis symmetry, 1D non-axis symmetry, and point. Okay. Point function also you can give. Okay. So I will take 3D. Okay. 3D component I have taken. Okay. In 3D, I will give the dimension as mm, all the dimension as mm. Can you see the changes which I am doing on the interface? Yes, sir. Okay. So मैंने क्या किया है? Geometry में जाके mm में किया, पहले मीटर में था. Okay. Then I will right click on it because I have to define a pipe. So I will take cylinder. See, there are various things. Either you can import. Okay. You can make the geometry in CATIA and you can import that geometry here. You can have live link interfaces also with AutoCAD, Inventor, Creo. Okay. Then PTC, ProE, Revit, SolidWorks, Solid Edge. Okay. So you can have the live link also, or you can make your own geometry. I always prefer to make my own geometry by using this block, cone, cylinder, sphere. There are more primitives. Okay. Polygon is there, eccentric cone, ellipsoid, helix. There are various geometries are also available. Okay. Then parts. Okay. Which parts libraries are there? Okay. Program also you can put. Okay. There are various options over here. Okay. So I will take a cylinder because my geometry is very simple. Okay. I have a pipe, okay, which is cylindrical in nature. What is the radius of my pipe, student? 0.25. 0.25 mm. And what is the height, length? 1 mm. 1 mm. Okay. So I have given the radius as 0.25 and height as 1, and I have built the object. Okay. So can you see the object? Okay. So this is the pipe. Okay. You can turn it anyway. Okay. So this is a pipe. Okay. Of radius 0.25 mm and height 1 mm. Okay. Then you can see XY of that pipe, XY plane. This is XY plane. This is YZ plane. And this is ZX plane. Okay. Now, if you want to make the pipe hollow, okay, transparent. Okay. If you want to see the pipe transparent, okay, then what you should do? You should click the option transparency. Okay. So you can see the pipe is hollow. Okay. So now you can see the pipe is hollow. Okay. So pipe is hollow. Okay. Now I have defined the geometry of the pipe. Okay. Now what I will do? I will add the material. Okay. Which material? Which fluid is flowing inside the pipe? Water. So I will add water because I've given. So add material from the library. You have to click right click. Add material from the library. So here recent material is there. So water is there. So I will click on water and add to component. So the water material get added from the library. So automatically here you can see there are so many things. Dynamic viscosity is there, ratio of specificity, electrical conductivity, heat capacity, density, thermal conductivity. Okay. So we will use a dynamic viscosity.
and density. Okay, these two we will use. So dynamic viscosity they have given as this much value. Okay, and density they have given as this rho. Okay, so this is the property. Okay, then we will have mesh. Okay, in mesh physically control mesh or user control mesh. Okay, तो यूजर कंट्रोल मैश भी तुम कर सकते हो या फिजिकली कंट्रोल मैश जो ऑलरेडी इनबिल्ट है. ओके, इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है. एक्सट्रीमली फाइन इज देयर. ओके, देन एक्सट्रीमली फाइन के बाद क्या है, एक्स्ट्रा फाइन है, फाइनर, फाइन, नॉर्मल, कोर्स, कोर्सर, एक्स्ट्रा कोर्स, एक्स्ट्रा कोर्स. ओके, सो नाउ वी विल हैव फाइन. ओके, so I will take fine. Okay, then build all. Okay, so you get a meshing, fine meshing you can get. Okay, so also you can make more finer, extremely fine you can do. Okay, so this is extremely fine mesh. Okay, so now I will run the simulation for fine, no need for extremely fine. So when you are doing research related problem or your BTech project work, you can have the finer. Okay, so meshing हो गया. Okay, now I will add the physics, that is module. तो यहाँ पे interface पे add physics है. So click on add physics. Okay, in add physics you have a, your window will be there for add physics. Okay, laminar flow. So you are doing laminar flow through pipe. So you're adding flow, add to the component. So it will get added. So here you can see laminar flow is added. Okay, in laminar flow it is denoted by the function SPF. SPF denotes the module laminar flow. So you have to remember this function SPF. Okay, so the entire, so here the compressibility, incompressible flow or compressible flow. So incompressible flow, water is incompressible in nature. Here you can see the equation for laminar flow. Okay, rho, ये equation हमने कल पढ़ा था कि नहीं, continuity equation, rho bracket u dot del into u. Okay, that is equal to this tensor function plus f. Okay, so this is basically a Navier-Stokes equation. Okay, I will derive this when I will do momentum equation. Just right now we have used only continuity equation, but when we will derive momentum equation you will come to know about this all forms. Okay, so this is about the equation. Then incompressible flow, atmospheric pressure is 1, reference temperature is 299. हम लोग टर्बुलेंस कर रहे हैं क्या, नहीं, लैमिनार फ्लो कर रहे हैं, तो इसलिए टर्बुलेंस मॉडल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये नहीं आएगा, रैंस नहीं आएगा. रैंस इज व्हाट, रेनॉल्ड एवरेज नेवियर स्टोक मॉडल. ओके, वो हमें लेना नहीं है, नन लेना है. ओके, नाउ दिस इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्लूइड प्रॉपर्टी. फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइंड. डेंसिटी फ्रॉम मटेरियल, विस्कोसिटी फ्रॉम मटेरियल. मटेरियल ऑलरेडी हमने वाटर को ऐड किया है, उसकी मटेरियल की जो डेंसिटी और विस्कोसिटी वो लाइब्रेरी में से वो ले लेगा. इनिशियल वैल्यू विल बी 0. ओके, फ्लूइड पार्टिकल इनिशियली दे आर 0 0 0 0, सो 0 इज असाइन. प्रेशर इज 0. ओके, वॉल के लिए कौन सी कंडीशन हमने अज्यूम की है, नो स्लिप कंडीशन. तो याद देखो, वॉल कंडीशन इज नो स्लिप कंडीशन. मैंने नो स्लिप, फ्रीज होती है, बाउंस होती है. Okay, there are various conditions for wall. Okay, I will show you the conditions. Okay, no sleep. Can you see? Yes, sir. Okay, so you can see no sleep is there, sleep is there. Is the interface visible to you? Yes, sir. Yes. So no sleep is there, electrosmotic velocity is there, then sleep is there. कि हमें no sleep लेना है. Okay, so I am taking no sleep. Then I have to define which is my inlet and which is my outlet. Okay, तो मैं inlet और outlet ले लूंगा. Okay, this is my inlet.
So inlet I will take down. Okay, this particular section as inlet. ओके यहाँ मैं एक फंक्शन लिखूंगा वेलोसिटी का टू 1 minus bracket x square minus z. I will tell you about this function. Divided by r a capital R A close the bracket, okay, multiply by u underscore एवरेज वेलोसिटी. ये फंक्शन क्या है मैं ये डिफाइन कर दूंगा. यहाँ पे पैरामीटर्स में जाना है मुझे. यहाँ फंक्शन डिफाइन करना है रेडियस. ये फंक्शंस तुमने एनसिस में भी डिफाइन किए होंगे. आर ए मैंने कितना दिया था 0.25 mm. और यू एवरेज मैंने कितना दिया है 0.0002. ओके तो ये मुझे देखना है mm/s. So let me check the equation first. Okay, so equation is 2 into this is 2 multiply by 1 minus x square plus sorry minus नहीं है यहाँ पे plus है plus z square divided by RA the whole square multiply by u average velocity. So now all see there is no square bracket, there will be a round bracket. So this expressions and all these things is given in the module, user module. I have shared user module of COMSOL on Moodle. I will give you the access key for that. So 2 into 1 minus bracket x square plus z square आना चाहिए. इधर z missing है. 2 into 1 minus bracket x square plus z square divided by RA square, close the bracket, okay, and multiply by u average. Okay, so now it is turned black, means the code is correct. Can you see the code expression for velocity? Hello? Yes, sir. Okay, so this is the expression we have wrote for average velocity. Okay, now we will take outlet. What should be our outlet of a pipe? Okay, so again right click, outlet. At outlet we will select atmospheric pressure boundary condition. Inlet में हमने velocity का function लिखा. अभी outlet में हम सीधा ये outlet atmosphere को connected है. तो so this is the outlet. We will select. So 4 is the outlet.
So outlet is 4, atmospheric condition क्या दिया मैंने, बाउंड्री कंडीशन 0, सप्रेस बैकफ्लो नहीं होना चाहिए, 0 दिया है मैंने, ओके, प्रेशर दिया है 0 दिया है, ओके। सो इनलेट दिया है, आउटलेट दिया है, ओके, वॉल की कंडीशंस हो गई है, ओके। नाउ आई विल टेक अ सॉल्वर, ऐड स्टडी, ओके, अगेन मुझे यहाँ क्लिक करना है, ऊपर ऐड स्टडी है यहाँ पे, वो क्लिक करना है मुझे, ओके। तो मैं स्टेशनरी लूंगा, ऐड स्टडी स्टेशनरी, यू कैन टेक टाइम डिपेंडेंट ऑल्सो, तो यहाँ स्टेशनरी आ गई, ओके, कंप्यूट। So now it will start computing. Here you can see the progress also. What is the computational progress? So you can see the progress 12% is there. So these are the solver, stationary solver, non-linear solver, different type of solver is there. So it is getting computed. Yes, our simulation is over. Okay, you can see the velocity contours. Okay, so now here in the results you can have the various काउंटूर, ओके। सो ये स्लाइस है, तो मुझे सरफेस में कर सकता हूँ, ये स्लाइस में दिखाई है उन्होंने, ओके। सो दिस इज पोस्ट प्रोसेसिंग, आई कैन टेक सरफेस ऑल्सो। ओके, तो मैंने सरफेस लिया है, so you can see if you will take the cross section of it, if you take the cross section of you, okay, this is the cross section, okay, and this is the velocity counter. So zero velocity indicate what? Zero velocity indicate that the velocity is minimum. So velocity minimum zero कहाँ पे है? Where you are seeing velocity is minimum? Wall. हाँ, on the wall, on the surface, है ना? Analytical में हमने यही देखा ना कि velocity is zero at the surface because there is a no slip condition. And maximum कहाँ पे है? This red color indicate maximum velocity. Okay, so this is the maximum velocity at the outlet. Okay, now we can see the profile also. Okay, let us draw the profile. कि profile कैसा है? Velocity distribution कैसा है? Okay, so you can take cut plane. Okay, you can take cut line. Okay, cut line you can take. You can take cut line. So x is in this direction and y is in this direction. Okay, तो एक्स वाई में हमें कट लाइन देखनी है, ओके, कि हमारा प्रोफाइल कैसा है, ओके, हाउ द प्रोफाइल इज। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूँ, हमारा टोटल रेडियस कितना है, 0.25 है,
So 0.5 ना, so 0.5 mm और y में अगर मुझे लेना है या फिर मैं 3D भी ले सकता हूँ, कट लाइन 3D, लेट्स टेक कट लाइन 3D. y में क्या होगा, y में भी 0.5 लेते हैं हम, चलो y में भी 0.5. अभी प्लॉट करता हूँ मैं. So it is coming like this. Okay, we don't want like this ना, we want on the क्रॉस सेक्शन. तो ये 0.5 और ये 0.2 के लिए मैं ये 0 करता हूँ. तो ओके, so better is you take 3D only, don't take 2D. Okay, I will delete 2D because in 2D what is happening, the entire 3 dimension is getting cutted into the sectional view. Okay, so I'm not taking cut line 2D. You have seen what problem I was facing in cut line 2D. Okay, you take cut line 3D if you want the cross section. Okay, so cut line 3D में कैसा है, cut line 3D में see I got a line. Okay, so I want on the cross section only, so it is 0 to 1 ना. So अगर मैं 0 to 1, okay, 0 0 किया है. Okay, x और y, तो x 0.5 करता हूँ तो कैसे दिखता है, it is gone. So what value, which value I can take so that I will get that entire line? If this I will put -1, then so what I have done, -1 to 1 I have taken entire cut line. Okay, y and z I have taken 0. Okay, now on this cut line I will be seeing how is my velocity distribution. Okay, so I will go to velocity plot. Okay, then now I can go in results. I can take 1D plot or 2D plot. So I'm not getting anything if I will take 1D plot. Okay, if I will take 2D plot, I will get the cross section. Okay, in 2D plot. Okay, then so in cut line 3D2 I have taken study one solution, correct? That is what I was expecting. Then in velocity what I have taken, so my final aim was to tell you how the profile of velocity is look like. Okay, so I've already taken cut line. Then now I want how I can
generate my velocity distribution. Okay, so for that I have taken 1D plot group. Okay, so in 1D plot group, so here cut line 3D2 I have taken study one solution. Okay, so I want to tell you that how the velocity distribution is. Okay, so velocity distribution is parabolic in nature, but in what way it is parabolic means how that profile is getting developed. So I mean to say you that, okay, so I want to tell you that this is the profile. Okay, I will draw here and then I will go to the interface. Okay, this is the pipe. Can you see the pipe which I have drawn? Yes, sir. Okay. Now, when I say that the velocity is parabolic in nature, means I want the profile to be like this. Okay. तो मैंने कौन से इस पे कट किया है लाइन को, ये वाले पे कट किया है ना, यहाँ पे कट किया है. तो ये लाइन पे ये कैसी लाइन दिखेगी मुझे क्रॉस सेक्शन में, ये ऐसी दिखेगी ना. तो मैंने ये लाइन पहले, ये रेड वाली लाइन पहले बिल्टअप की. कैसे बिल्टअप की मैंने? कट लाइन 3D लिया. कट लाइन में 2D लेता हूं तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट ये प्लेन आ जाता है ऐसे सामने मेरे पास. तो ये नहीं करना है. कट लाइन 3D लेना है, मतलब ये लाइन मैंने कट की. ओके, ये तुम दे सकते हो इसका Z, मैंने X दे दिया है. ओके, अभी ये लाइन पे मेरी प्रोफाइल कैसी होगी, वेलोसिटी की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए. ओके, आई शुड एबल टू सी दिस प्रोफाइल. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. ओके, सो how I will do that, that is the big question. Okay, on the interface. Okay, so मैंने कट लाइन 3D ले ली. यहाँ पे मैंने यहाँ फंक्शन भी कॉल किया. ओके, सो मैंने प्लॉट भी किया उसको. इफ आई विल टेक दिस लिटिल अप, ओके, so what I up means 0. Okay, so 0, so let's say 0.5 पे मैंने ली. ओके, 0.5 पे मैंने ये लाइन ली. ओके, कट लाइन 3D. नाउ मुझे अभी उसका प्रोफाइल निकालना है. ओके, सो हाउ आई विल डू दैट प्रोफाइल, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो मैंने कट लाइन ये की डिफाइन. देन मैंने मेरे रिजल्ट में जाके 1D प्लॉट ग्रुप ले लिया. ओके, so 1D प्लॉट में आई हैव टू लाइन ग्राफ लेना है मुझे. काय करणार आहे तुम्ही? हा, कुसा ना. So what is the nature, can you see? Hello, पैराबोलिक नेचर सर. can you see the plot? ओके, तो ये क्या है, पैराबोलिक नेचर है. ये देखो, ये क्या है, 0 to 0.5. वाई 0 to 0.5? बिकॉज 0.25 क्या है हमारा, रेडियस है. ये 0 to 0.5 मतलब टोटल डायमीटर इज, आर्क लेंथ इज 0.5. ओके, यू कैन सी ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये कुछ गड़बड़ आ गई है ना, ये 6 आ गई है ना. 60 into 10 to the power minus 6.
पर तुमने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी निकाली थी? 0.004 निकाली थी ना, और ये Yes. कुछ आ गई 0.0 है ना, 0.004 निकाली थी, ये आई गई है -0.006। तो ये रॉन्ग है ना? यस और नो? Yes. This is not matching with our analytical. So where we are doing wrong है ना, हमारा CFD और एनालिटिकल मैच नहीं हो रहा है, तो मैं कहाँ रॉन्ग कर रहा हूँ? ओके, तो मैंने क्या किया था, कट लाइन 3D ली, ओके, डेटा सेट में जाके फिर रिजल्ट में जाके मैंने 1D प्लॉट ग्रुप लिया, 1D प्लॉट ग्रुप पे मैंने राइट क्लिक किया तो मुझे लाइन ग्राफ आ गया, लाइन ग्राफ में मैंने ये कट लाइन 3D कॉल की और मुझे ये नेचर मिला पैराबोलिक का। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ओके, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, ओके, ये क्या है, ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड।